Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karunesh Mishra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to give a revisional lectures to all of you of the rest chapters of democracy. What is democracy and why democracy? So today we will study about the broader meaning of democracy. Let's start. Dear students, what according to you is the broader meaning of democracy? And I have explained you also about it previously to all of you. I hope that it is clear to you. The most common form that democracy takes in our times is that of representative democracy. Dear students, you have already read about this in the previous class. In the previous class says in the countries we live. Okay, so in the countries we called democracy, all the peoples do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the peoples. Even the majority does not rule directly. The majority of peoples rules through their elected representatives. This becomes necessary because modern democracy involves such a large numbers of people that it is physically impossible for them to sit together and to take collective decisions. Even if they could, the citizens does not have a times, the desires or the skills to take part in all the decisions. This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracy from non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. Dear students, democracy is a form of government in which representatives of an area in a country sit together to take a decisions. Elections are held to choose the representatives, and native peoples or the citizens are allowed to participate in the elections. So democracy is also a principles that can be applied to any sphere of life. Okay students, give some arguments in favor of democracy. So arguments for democracy are: first one is a democratic government is a more accountable forms of government. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. And second argument in favor of democracy is based on negotiations and deliberations which improves the quality of decision making. And the third one is they allow us to correct our own mistakes. In a democracy there is always a scope that the rulers can change their wrong decisions, or the rulers themselves can be changed. What is representative democracy? Why is it criticized? Let's study about it. Let you know, dear students, representative democracy is a form of government which is run by the elected representatives representing the majority of the peoples of the country. It is needed because it is impossible for all the peoples of the country to take a collective decisions. Also all the citizens may not have a time and skills to take the decisions. We live in a democratic country. All over the world people want democracy. All people want democracy, and peoples are struggling for it.
Earlier, the countries that are not democratic earlier are becoming democratic now. All great people said nice things about democracy. It is obvious that democracy is the best. Still, many arguments are given against it. Some of them are. So, what are the arguments against of democracy? So this is very important and often asked in examinations. Give some argument against of democracy. So dear students, leaders keep changing in a democracy. डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वे चेंज होते रहते हैं. दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, जिससे जो है लोकतंत्र जनतंत्र में जो है स्थिरता बनी रहती है. सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशंस एंड पावर प्ले. जो लोकतंत्र जो है ये क्या है, एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और शक्ति प्रदर्शन है. सो पॉलिटिशियंस फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. जो राजनेता होते हैं वो आपस में ही जो लड़ते झगड़ते रहते हैं. सो पॉलिटिशियंस फाइट अगेंस्ट देमसेल्व्स, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. इसमें नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती. सो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स. इट लीड्स बैड डिसीजंस. So many leaders have to be consulted in a democracy. In a democracy, this leads to delay. Ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. They shouldn't decide anything. So democracy leads to the corruptions also, for it is based on electoral competitions. The politicians play dirty tricks to win the elections, and they also use the muscles power. Democracy has not ended poverty in our country and in the other part of world. So these are the arguments against of democracy. So dear students, now we will study about how election in India are different from the Mexico. How election in India are different from the Mexico. Okay dear students, now we are going to study about how election in India are different from the Mexico. भारत में जो चुनाव होते हैं वो मैक्सिको की चुनाव से कैसे जो है भिन्न होता है, अलग होता है. Dear students, both the countries have a multi-party systems. मैक्सिको और इंडिया दोनों ही जो है में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बहुत से राजनीतिक दल हैं. इन केस ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर्स ऑफन लूज इलेक्शंस, वेयर एज इन केस ऑफ मैक्सिको PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनल पार्टी, did not lose a single elections for more than 70 years. इंडिया में जो इलेक्शंस होता है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल होता है और रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग, उसे जो हारने की संभावना बनी रहती है. लेकिन मैक्सिको में जो पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट होता है, यानी इलेक्शंस होता है, तो उसमें हमेशा जो है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनल पार्टी की जो है जीत होती है. पिछले जो है 70 साल से ऐसा ही होता आ रहा है वहाँ पे. So election in India are held after 5 years, where in case of Mexico elections are held after 6 years. भारत में जो है हर 5 साल बाद जो चुनाव होता है, जबकि जो है मैक्सिको में 6 साल बाद जो है चुनाव होता है. Government officials work under the election commissions during the elections days. चुनाव के जो दिनों में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, यानी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, वे इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो काम करते हैं. वेयर एज दिस इज नॉट ट्रू फॉर मैक्सिको, लेकिन मैक्सिको में ऐसा नहीं है. सो इन दिस वे द इलेक्शन systems of Mexico is different from the elections procedures of India. Okay students, now election in China do not represent people's verdict. Explain.
8 in China, dear students, elections are regularly held after every 5 years. चाइना में जो है हर एक 5 साल बाद जो क्या होता है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, देश के जो पार्लियामेंट, जो चाइना के पार्लियामेंट्स को इलेक्शन कर चुनाव करने के लिए, जिसे क्वेंगो रैनी में मेन डेब्यू दाओ नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और नेशनल पीपल जो कांग्रेस होता है उसके पास पावर होता है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, यानी जो देश के प्रेसिडेंट की नियुक्ति करने का। इट हैज़ नियरली 300 मेंबर्स। नेशनल पीपल कांग्रेस में जो है 3000 जो है तकरीबन जो 3000 जो सदस्य होते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, जो पूरे चाइना से जो चुन कर जो आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ जो है सदस्यों का जो चुनाव जो है सेना करती है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट्स नीड्स अप्रूवल्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि इलेक्शन चुनाव लड़ने के पहले कोई भी जो कैंडिडेट्स जो चुनाव में खड़ा होता है उसे जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी चाइनीज़ साम्यवादी जो दल है उसकी अनुमति यानी उसका अप्रूवल जो है लेना पड़ता है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वे लोग जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, और 8 स्मॉलर पार्टी एलाइड टू इट, और इससे जुड़ी हुई जो है छोटी छोटी जो है 8 अन्य जो है राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं, they are only allowed to contest elections, उन्हें ही केवल चुनाव लड़ने की जो अनुमति होती है, स्वतंत्रता होती है in 2002 and 3। So the government is always formed by the communist party, और चाइना में जो सरकार बनती है वो किसकी बनती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। So that is why China and Mexico are also are non-democratic country, there is no true democracy over there, there is no democracy। Okay, why is Zimbabwe not considered a democratic country? So we have studied about the Mexico, we have studied about the China, now we are going to study about the Zimbabwe। Dear students, Zimbabwe जिम्बाब्वे में क्या है, ये हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में जो पढ़ा है। सेम पार्टी रूलिंग। डियर स्टूडेंट्स, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन द ईयर 1980। जिम्बाब्वे को जो वाइट माइनॉरिटी से जो है इंडिपेंडेंस जो है 1980 में जो मिला। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द पार्टी JNUPF, और तब से जो है वहाँ पर एक ही राजनीतिक पार्टी का जो शासन है वो JNUPF का है। इट्स लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे, इसके जो नेता हैं कौन है, रॉबर्ट मुगाबे हैं। हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के समय से ही जो है ये जिम्बाब्वे यानी देश में जो है क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अनफेयर इलेक्शंस, देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन जिम्बाब्वे। Dear students, elections has been held regularly and always won by the ruling party JNUPF. They have not been free and fair। तो जो जिम्बाब्वे में है वहाँ पर वन पार्टी रूलिंग सिस्टम है, और वहाँ पर हमेशा जो है इलेक्शन में जो है रूलिंग पार्टी का ही जीत होता है। दे हैव नॉट बीन फ्री एंड फेयर। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द फेयर ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट मुगाबे अपीयर्स टू बी पॉपुलर। प्रेसिडेंट मुगाबे जो है वो पॉपुलर हैं, काफ़ी जो विख्यात हैं। एंड ऑल्सो यूज ऑन फेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस, लेकिन वे इलेक्शन चुनाव में जो है गलत रास्ते जो अख्तियार करते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं। हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। उनकी सरकार ने जो है कई बार जो देश के जो संविधान में जो बदलाव किया टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की जो शक्ति को जो बढ़ाने के लिए, एंड मेक हिम लेस काउंटेबल। सप्रेशंस ऑफ द अपोजिशंस। अच्छा, जिम्बाब्वे में ऐसा क्या है, सप्रेशंस ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी है यानी जो विपक्षी जो दल है
हाँ, उसके जो वर्कर्स जो कार्य करता है दे आर ऑफन हैरेस्ड, उनको काफ़ी परेशान किया जाता है एंड देयर मीटिंग इज डिसरप्टेड बाय द रूलिंग पार्टी, और जो रूलिंग पार्टी है वो उनकी जो सभाओं को जो बंद कर देती है, डिसरप्ट कर देती है। राइट टू द फ्रीडम मिसिंग, public protest and demonstrations against the government are declared illegal. There is law that limits the rights to criticize the president. टेलीविज़न एंड रेडियोस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, टेलीविज़न और जो रेडियो रहता है उस पर भी गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार का जो नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। एंड there is a law that limits the right to criticize the president. Okay, absence of independence judiciary. The government has ignored some country's judgment that went against it and has prescribed judges. So these are the points which you can write for the justifications of Zimbabwe is not a democratic country. Okay students, now once again I am going to explain you about the non-democratic countries on the basis of following arguments. First, I have explained you about the Pakistan. Dear students, I have explained you that in Pakistan's General Pervez Musharraf lead a military coup in October 1999. पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है सैन्य जो शासन जो लागू कर दिया 1999 में। ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो लोकतंत्री जो सरकार, जो जनता की जो सरकार थी उसको उन्होंने क्या किया, ओवरथ्रू कर दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री, और खुद को जो है देश का चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने जो है स्वयं घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट्स एंड इन 2002, और बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट का जो पद ग्रहण किया। एंड द ईयर 2002 हेल्ड रेफरेंडम, और 2002 में जो है रेफरेंडम जो है उन्होंने जो पास किया इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन, जिससे उनके कार्यकाल में और 5 साल का जो है वृद्धि हो गया, 5 साल और बढ़ गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट यानी डेमोक्रेसी को जो चाहने वाले थे उन्होंने क्या कहा, सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, जो रेफरेंडम था उसमें जो काफ़ी जो फ्रॉड था। इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है इशू किया दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव जो है लाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, प्रेसिडेंट्स के हाथ में ये पावर था कि दैट ही कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकते थे, खारिज कर सकते थे। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स व्हिच is dominated by the military officers. After passing this law, इस law कानून को पास करने के बाद elections were held to the national and provincial assemblies. National and provincial assembly में elections होता है। So Pakistan has had elections, पाकिस्तान में elections होता है, but elected representatives have some power, elected जो representative होते हैं उनके पास कुछ शक्ति होती है, but the final or real power is rested with the military officer and General Pervez Musharraf। लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है या फाइनल या एक्चुअल जो पावर होता है दैट इज इन द हैंड ऑफ मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। सो क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री। Under General Pervez Musharraf. Okay, students. People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decisions. The power to take final decisions rested with the army officials and with General Pervez Musharraf.
and none of them were elected by the people. So this happens in many dictatorship and monarchies. They formally have an elections, parliament and government, but the real power is with those who are not elected by the people. So in a few countries the real power was with some external powers and not with the locally elected representatives. This cannot be called people's rule. Okay, so on the basis or on the ground of these discussions, we can say that there is no democracy in Pakistan. Okay students, now take the example of China. There is also no democracy in China. So in China, dear students, elections are regularly held after every 5 years. China में जो हर एक 5 साल बाद जो क्या होता है elections होता है for electing the country's parliaments. देश की जो पार्लियामेंट सदन की जो चुनाव के लिए कॉल टोइंगो रैमिन डेवेन्यू दिहोई नेशनल पीपल कांग्रेस जिसे कहा जाता है. द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसके पास पावर होता है वो प्रेसिडेंट की नियुक्ति करने का. इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. इसमें जो है लगभग जो है 3000 जो सदस्य होते हैं जो चाइना के जो अलग अलग हिस्सों से जो चुन कर आते हैं. सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी और कुछ का जो है सेना जो है चुनाव करती है. कुछ को सेना चुनती है. बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, कोई भी इलेक्शंस जो है लड़ने के जो पहले कैंडिडेट्स नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज. जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो है अप्रूवल लेना पड़ता है. ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एट स्मॉल पार्टीज अलाउड टू it were allowed to contest elections held in 2002 and 3. So the government is always formed by the communist party. तो जो चाइना है वहाँ पर हमेशा जो किसकी सरकार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में जो चाइना अब हम लोग ओके तो कम्युनिस्ट पार्टी का बनता. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ मैक्सिको. डियर स्टूडेंट, मैक्सिको में क्या होता है? सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में जो मैक्सिको को जो स्वतंत्र जो मिला, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर. मैक्सिको में हमेशा 6 साल बाद जो इलेक्शंस होता है, चुनाव होता है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए. द कंट्रीज हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. यहाँ पर भी जो है मिलिट्री यानी सेना का या तानाशाह का जो शासन नहीं रहा है जैसे पाकिस्तान में रहा. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज वॉन बाय द. लेकिन 2000 तक जो है जितने भी चुनाव हुए उसमें जो है PRI यानी इंस्टीट्यूशनल लिबरल पार्टी की जो है जीत हुई. अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. जो विपक्षी दल होता है वो चुनाव लड़ता तो है बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी भी जो जीतता नहीं है. सो द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स. जो इंस्टीट्यूशनल लिबरल पार्टी है जो बहुत सारे गलत रास्ते जो है अपनाती है जो चुनाव जो है जीतने के लिए इमोशनल पावर का, पॉलिटिकल पावर का यूज़ करती है. एंड ऑल दोज हु आर known as the PRI was known to use many dirty tricks to win the elections. All those who were employed in the government offices had to attend its party meetings. Teachers of the government schools used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activists of the opposition political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted. और कई काल तो जो पोलिंग बूथ्स जो चुनाव जहाँ पड़ता है पोलिंग बूथ्स को ही जो क्या करते हैं ये लोग जो है चेंज कर देते हैं. वी आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट्स विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स. जिससे लोग जो अपना जो वोट नहीं डाल पाते हैं. सो कास्ट देयर वोट्स. द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कंपैरिजन फॉर इट्स कैंडिडेट्स. और PRI इंस्टीट्यूशनल पार्टी जो अपने कैंडिडेट्स के लिए पानी की तरह पैसा भी बहाती है चुनाव में. So should we consider the elections described above are the examples of people selecting their rules? No. So dear students, there is also no democracy in the country Mexico.
Okay, got it. अब हम लोग जो है जिम्बाब्वे के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं फिर से. जिम्बाब्वे attained independence from white minority rule in 1980. in 1980 जिम्बाब्वे को व्हाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस कब मिला? 1980 में जो मिला. सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय JNUPF. तब से जो वहाँ पर JNUPF का ही जो शासन है. द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. So elections were held regularly and always won by the JNUPF के द्वारा जो जीत होती है. President Mugabe was the popular but also used unfair practices in elections over the years. His government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Opposition parties workers were harassed and the meeting disrupted. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. So on the basis of these discussions we can say that there is no democracy in Zimbabwe also, as there is no free and fair elections. Okay, and election is always won by the JNUPF. The opposition party workers are harassed. Okay, got it. Thank you for listening me. Have a great day to all of you. From tomorrow we will start the new chapter. Have a great day to all.